Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So always there is a anxiety, sir. How many vacancies can come this year, and what is the likely position of vacancies? So on the basis of performance of current year, we will try to see through the data where we can see higher number of vacancies this year. Now, if we look at the position of net NPA, that comparison will give some insight about likely number of vacancy and affordability of banks. Lower is the level of net NPA. That means the bank will have more capacity to generate higher profits and hence more affordability for staff. These are all indicators. We will be discussing various indicators and then we will conclude what will be the likely number of vacancies in coming days. And by that time we will have more data. Now if we look at the net NPA figure for the first time in last 5 years, all public sector banks are having net NPA less than 5%. And this is the highest level what RBI anticipated, that banks should manage their net NPA below 5%, and now they are able to achieve it. So to that extent, it is a good result of financial year 2022. Now Bank of Maharashtra leads the pack with lowest net NPA as at 31st March 2022. 0.97%. So this bank has good capacity to recruit more people this year. Then SBI comes in the range of 1 to 2%. SBI net NPA is 1.02%. Bank of Baroda is 1.72%. And now this is very significant. As Bank of Baroda net NPA has touched 1.72%, we can see the surprise that Bank of Baroda may come out with vacancies this year. Again, word is may, because ultimate decision is of management. But now they have affordability. Last year they were in loss, this year they are in profit. And the future also is good. Then Indian Bank, 2.27%, Bank of India 2.34%, Canara Bank 2.65%, IOB 2.65%, UCO Bank 2.70%, Punjab and Sindh Bank 2.74%. All these banks within the range of 2 to 3%. All these banks have good affordability to recruit more people. And they are in need of staff also, because some of the banks have not recruited in last few years. So good sign for this year. Now you will find 9 banks out of 12 are having net NPA below 3%. Again, very significant data. Then 2 banks are having net NPAs between 3 to 4% range. They are Union Bank 3.68 and Central Bank of India 3.97. Now, these 2 banks also have good affordability, because below 4% is a good net NPA. Central Bank has recruited number of people this year also, but many of them may not join. So those vacancies will be unfilled. Again, they may offer these vacancies this year. Then, highest net NPA among us 12 these banks is Punjab National Bank, 4.80. And why this is highest? Because this is maybe on account of amalgamation of 3 banks. Although in other banks also the number of banks merged, but it may be incidental that all the 3 banks were having high level of gross NPA. So although PNB is providing good amount of provisions every year, but still their net NPA is shade below 5%. And that has put pressure on PNB to have lesser staff. As we have seen last year, despite we were hopeful that they will take more people, but the number of actual vacancies were much less than anticipated.
but this year net NPA level is comparatively favorable than last year, so we can see some jump in vacancies in PNB also. This is just an analysis, just based on some data that gives you comfort that this year, yes, we may get higher number of vacancies. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. इस साल बैंकों की क्या अफोर्डेबिलिटी होगी, क्या रिक्रूटमेंट होगी, ये हमारे मन में एक प्रश्न है. और बार बार आप पूछते हैं सर आपका क्या अंदाजा है कितनी वैकेंसी आ सकती है. तो कुछ दिन हम बैंक का 31 मार्च 2022 के डेटा को एनालाइज करेंगे और वहां से देखेंगे कौन से बैंकों की अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो गई है ओवर लास्ट प्रीवियस ईयर्स. नाउ नेट एनपीए एक सबसे बड़ा इंडिकेटर है. तो सबसे पहले हम नेट एनपीए को डिस्कस कर रहे हैं. बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट एनपीए है 0.97%, बिलो 1%. एक ही बैंक है जो 1% से नीचे पहुंच गया. बहुत अच्छी अफोर्डेबिलिटी इसकी हो गई है स्टाफ को रिक्रूट करने की. फिर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.02%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.72%. केवल 2 बैंक हैं जो 1 और 2% की रेंज के अंदर है. अब यहां पर सबसे बड़ा सरप्राइज है बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा ने कई सालों से रिक्रूटमेंट नहीं की है और यहां पर अब उसकी अफोर्डेबिलिटी बड़ी अच्छी हो गई है. तो इस साल सरप्राइज कर सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा हमें वैकेंसी दे सकता है क्योंकि लास्ट ईयर वो लॉस में थे, इस साल वो प्रॉफिट में है और नेट एनपीए भी बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 3rd नंबर पे हैं वो 12 बैंकों में. तो यहाँ एक आशा की किरण है. इसके बाद है इंडियन बैंक 2.27%, बैंक ऑफ इंडिया 2.34%, केनरा बैंक 2.65%, आईओबी 2.65%, यूको बैंक 2.70%, पंजाब एंड सिंध बैंक 2.74%. ये सारे के सारे बैंक 2 से 3% की रेंज में है. 2 और 3% नेट एनपीए का मतलब है उनकी प्रोफेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी. बहुत अच्छी प्रोफेबिलिटी का सिम्टम है. तो रिक्रूटमेंट भी अच्छी आ सकती है इन बैंकों में. अब इनमें आप देखेंगे कई बैंक ऐसे थे जो पिछले सालों में रिक्रूट नहीं कर रहे थे, अब उनकी अफोर्डेबिलिटी है. तो यहां पर भी आप वैकेंसीज में जंप देख सकते हैं इन बैंकों के अंदर. इसके बाद है यूनियन बैंक 3.68, सेंट्रल बैंक 3.97. 3 से 4% की रेंज में 2 बैंक है. अब यहां पर आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ने इस साल काफी रिक्रूटमेंट की है, यूनियन बैंक ने भी की है, मगर इसमें हो सकता है ज्वाइनिंग कम हो, तो ये वैकेंसीज फिर अवेलेबल हो जाएंगी. तो यहां भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, अफोर्डेबिलिटी है. अब इस पैक में सबसे नीचे खड़ा है पंजाब नेशनल बैंक, जिसका 4.80 नेट एनपीए जो हाईएस्ट है 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. और यही एक कारण आप समझ सकते हैं कि जो पिछले साल आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा वैकेंसीज पीएनबी से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अल्टीमेटली वैकेंसीज उतनी ज़्यादा नहीं आई. क्लैरिकल में भी रिड्यूस आई और ऑफिसर लेवल पे भी रिड्यूस है. उसका कारण क्या है? नेट एनपीए का हायर होना. बट इस साल काफ़ी घटा है नेट एनपीए, तो लास्ट ईयर से हायर. बट जो पहले सालों में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती थी वो हम उम्मीद पीएनबी से नहीं कर सकते. मगर यहाँ पर जो सरप्राइजिंग फैक्टर इस साल निकल के आ सकता है, जो मुझे लग रहा है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा. क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कई साल से रिक्रूटमेंट नहीं की है, तो जो भी उनका सरप्लस स्टाफ होगा वो एब्जॉर्ब हो चुका होगा. लास्ट ईयर लॉस में थे, इस साल प्रॉफिट में है. अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ चुकी है. तो इसके अंदर हम एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमें अच्छी खबर दे दे. ये सारी संभावनाएं हैं. हम अलग अलग डेटा एनालाइज करेंगे जो लीड करेगा वैकेंसीज के लिए, क्योंकि जहां रिटायरमेंट एक फैक्टर है, उसकी कितनी रिप्लेसमेंट होनी है. फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ हमारी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ पर भी बहुत डिपेंडेंट होती है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हुई है इस साल, और ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कि इस पहल को हम एडवांटेज में कन्वर्ट करें. गॉड ब्लेस यू ऑल.